उससे इश्यू तो नहीं है इसमें। Okay, next is question number 19. See ya. जी Yes, अब्दुल्ला sir. शेयर हो रही है जी। क्वेश्चन नंबर 19 Figure 1.1 shows the distance time graph for two cyclists A and B. They started a 500-meter race together, but finished the race at different times. Use figure 1.1 to determine the distance between A and B at t is equal to 20. So you have to find out the distance between A and B at t equals 20 seconds. At t equals 20 सेकंड पे आप डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा? एक सेकंड मैं पास पे ले आऊं. ओके जी सर, इसका होगा सर ऐसे नीचे कर सकते हो. जी 60 sir. 60 the distance at time 20 second is 60 and how we at time 60 second तो मुझे अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ हमारा कितना बना हुआ है? The graph is इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है? at time 20 सेकेंड 20 सेकेंड पे एक ने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ मैं 60 सेकेंड देख रहा था. So at 20 second the distance covered by B is 260. 200 and the distance अच्छा 20 covered by है. A is distance covered by the A is 260. So the difference between them is 60. हाँ जी. So 60 meters. The difference in the time taken by A and B for the race is difference कैसे निकालेंगे? सर 12 लगा है मुझे वैसे. How? जैसे अगर आप देखेंगे ऊपर करके तो ए जल्दी फिनिश कर लेता है. एक का डिस्टेंस कहीं यहाँ तक है. So हाँ जी. here the time taken by A is 38 seconds and the time taken by the B is 50 seconds. Now the difference of the time is 50 minus 38, that is 12, है ना? So 1 marks का working show नहीं करनी है. You just have to write the answer 12 seconds. Next, cyclist C starts the race at the same time as A and B. At the same time as A and B and covers the first 200 meter of the race at a constant speed of, okay, speed given, distance is given. He then accelerates and finishes the race at 60 seconds. मतलब वो अब accelerate हो रहा है and finishes the race, finishes
द रेस एट 60 सेकंड पे खत्म हो रही है, तो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी increases with in increasing rate, जैसे भी कह सकते हैं ग्रेडियंट जो है वी टी का वो इंक्रीज होगा। So on figure 1.1, draw the distance time graph for the cyclist C. C वाले के लिए आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चे पहले उसने क्या किया, he is moving, okay, distance given है, time speed is given। तो बच्चे टाइम अगर मैं यहाँ पे निकालूं, टाइम किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। जी So 41 distance वैसे is आंसर। 200 and then speed is 5, so 40 second। तो बच्चे 40 second तक he is moving with a constant speed and 60 second पे he then accelerate and finishes the race at 60 second। तो 60 second पे वो रेस को फिनिश कर रहा है। तो बच्चे पहले तो हम बनाते हैं 40 सेकंड तक। 14 सेकंड तक तो ग्राफ क्या रहेगा, graph will be a straight line because in question it's mentioned that the speed is constant and then उन्होंने लिखा हुआ है he then accelerate होगा तो gradient increase हो जाएगा and now you have to show that the gradient is increases, so here gradient increases and initially up to 40 seconds graph is a straight line, the graph is a straight line। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam। Next, calculate the average speed of the cyclist C for the whole race। Now you have to find out the average speed। मायदा average speed कैसे निकालते हैं? टोटल Average, डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हाँ जी, total distance over total time। So the total distance is कितना distance है? Total distance is 500 meter, तो 500 meter तक जाएंगे हम। And the total time is 60, very simple, 500 over the total time is 60। और ये मुझे कहाँ से पता चला, ग्राफ। So अब चेक करें, 8.33। 8.33 is the answer। So answer is 8.3 meter per second। जी अब्दुल्ला, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े। अब्दुल्ला, So a children's race consists of a steel cable that runs between two posts of different heights. As shown, a girl starts and finishes the ride at rest. Her horizontal motion can be taken as an initial uniform acceleration for 3 seconds, followed by constant speed of 2.4, and a final deceleration that lasts for 1 second. On figure, draw a speed time graph. ओके। सो पहले तो हम इसमें डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। टाइम स्पीड ऐसे लिख लेते हैं। here you have a time, here speed, initially from 0 to 3 second speed 0 to an initial uniform acceleration of 3 second or 3 second followed by a constant speed of 2.4 meter per second। So 2.4
meter per second is the speed. Next is from आगे क्या है बचे 3 से further 5. So 3 plus 5 become 8. हम लिखते हैं from 3 to further 5 mean 3 to 8 seconds. Speed still, their speed is 2.4 meter per second. और फिर उसके बाद कहते हैं a final uniform deceleration that lasts for 1 second. तो 8 में जब आप 1 सेकेंड ऐड करेंगे तो अब्दुल्ला क्या बन जाएगा सर फिर कम होते जाएंगे स्पीड नहीं 8 में जब 1 सेकेंड और ऐड होगा सो टोटल टाइम बिकम 9. एंड द स्पीड फाइनली बिकम 0. उन्होंने लिखा है ना दैट लास्ट्स फॉर 1 सेकेंड. अच्छा और शुरू में क्या है कि a girl starts and finishes the ride at rest. मतलब फाइनल स्पीड उसकी 0 है. ठीक है. हर हॉरिजॉन्टल मोशन कैन बी टेकन एज a uniform acceleration. So whenever the acceleration is uniform, the speed remains constant. Constantly increasing ऐसे कह सकते हैं sorry ऐसे कहेंगे the speed increases with the same rate or constant rate. Now we have a points. अब हमने क्या करना है on figure 9.2 draw a speed time graph for the horizontal motion. Speed time graph आपने ड्रा करना है और इसमें वैल्यूज तो एज सच रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन हम एक वैल्यूज रख लेते हैं. यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0, दिस इज 1, हियर इट इज 2, इसको हम ऐसे कह देते हैं बच्चे 3 एंड हियर यू हैव 4. और इसी तरह यहाँ पे हम कह देते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 सेकेंड. ग्राफ हमारा 10 तक जाएगा ना जी अब्दुल्ला. अब 0 से 3 तक स्पीड कितनी है 2.4 2 पॉइंट फ्रॉम 0 टू 3 the speed is 2.4 and initially she starts from rest. So z 2.4 2.2 2.4 यहाँ तक आपका ग्राफ ऐसे बनेगा. मतलब यहाँ से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि पहले स्पीड 0 से स्टार्ट होंगे क्योंकि एट रेस्ट से बात किया हुआ है हाँ because initially she is at rest and at the end their velocity again becomes 0. Now after 3 to 8 second 3 to 8 second she is moving with a constant velocity. So 3 to 8 second she is oh, हाँ जी two ऐसे ही four होगा यहाँ तक she is moving with a constant speed वेलोसिटी and then there is a uniform deceleration. तो फिर यूनिफॉर्म डिसलरेशन में अप टू 9 सेकेंड. तो तो 9 फिर 9 सेकंड्स तक एक स्ट्रेट लाइन जी इस तरह. तो ये आपका ग्राफ बचे बन बनेगा. जाए नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बच्चे एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी. तो एंड यूनिफॉर्म कब बनेगा व्हेन देयर इज ए कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी हाँ if there is a constant or uniform change in velocity in equal interval of time. वैसे कह सकते हैं the velocity the equal change in velocity the equal change in velocity for equal interval of time for equal interval of time
produces uniform acceleration. Uniform acceleration. Next is the final deceleration is larger in size than the initial acceleration. Explain how the data shows this. देखिए पहले उसको 2.4 जाने के लिए she takes 3 seconds, but from 2.4 to she just take 1 second. तो इसका मतलब है यहाँ पे उसका ग्राफ जो है वो ज्यादा तेजी से क्या हुआ है, इट इज डिक्रीजेस विद हायर स्पीड. ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम speed from 0 to 2.4 second, या gradient is steeper लिख सकते हैं. The speed from 0 to 2.4 meter per second, and the speed from 0 to 2.4 meter per second achieved in 3 seconds. ठीक है, but the speed become 2.4 meter per second to 0 in just 1 second. दूल्हा आंसर देखो क्या लिखा हुआ. जी सर. देखिए पहले 3 सेकंड लगे हैं उसको टू अचीव द स्पीड ऑफ 2.4, but 2.4 से 0 में just occurs in a shorter time, or acceleration took 3 seconds and deceleration took 1 second. acceleration takes 3 seconds. ठीक है, horizontal distance traveled by the girl in 8 seconds. तो आपने सबसे पहले बताना है the distance equals area under speed time graph So the distance is area तो trapezium था, and trapezium में upper side and lower side. तो अब्दुल्ला क्या होगा आंसर? S is equals to 1/2. नीचे वाली लाइन की लेंथ कितनी है अब्दुल्ला? 9 तक जा रही है ना, फ्रॉम 0 to 9. 9 का 9 ही ले लेंगे. नहीं, देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक है. ओ 8 सेकंड तक का है खाली. चले, उन्होंने 8 सेकंड तक का कहा हुआ, तो इसमें भी ट्रेपीजियम ही लगा दें. तो हम लेंगे 8 सेकंड प्लस ऊपर वाली जो लाइन है मायदा, इसकी क्या लेंथ होगी? 5. Good. Into the distance height between them is 2.4. तो 1/2 8 plus 5 2.4. तो 1/2 8 plus 5 into 2.4. जी अब्दुल्ला क्या आंसर आया? मैं कौन सा 8 plus 5 क्या बन गया सर? 13. Multiplied by 2.4. 15.6. 0.6 for 2 significant, this become 16 and the unit of distance is meter. Answer ठीक है. Answer ठीक है. चल. Next is the girl has a mass of 30 kg. Mass is given. The vertical distance is basically the height is given during the ride. The gravitational field strength is given. G is given.
Calculate the decrease in the potential energy of the girl. So loss in potential energy, loss in gravitational potential energy equals mgh. So potential energy बस आपने निकालनी है. Mass 10 1.6. 300 into 1.6 is ये आ गया है 480. 480 आया आंसर जी जी 480. And Abdullah, the unit of potential energy is joules joules. Next, I think the gain in kinetic energy of the girl is less than the decrease in potential energy. कहते हैं all the potential is not converted into simple wording में क्या होगा? All potential energy is not converted into kinetic energy. Why? कहते हैं कि सारी potential kinetic में convert नहीं हो रही है. Because इस पिक्चर में देखेंगे Not व्हील है ना. some energy is lost in the surroundings. Not in the surrounding. देखेंगे व्हील है ना. There is a friction between the wheel and the cable. So some energy is lost, heat energy. तो हम लिखेंगे the wheel has some friction with the steel cable है ना. तो हम लिखेंगे there is a friction between there is a friction between wheel and cable. So some energy is converted. So some energy is converted into the thermal energy. स्लाइड करके आ गया एंड देयर इज अ व्हील एंड व्हील और केबल में फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से कह सकते हैं कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी. A group of pupils make measurement to show that the girl's speed is constant during the middle section of the ride. कहते हैं कि जो लड़की की स्पीड है वो in the middle section of the ride their speed becomes constant. Suggest what measurements are made and how they shows that the speed is constant. G. How they shows that the speed is constant? If the girl cover equal distance in equal interval of time, then the speed is constant. ऐसे ही हम जी बोला. तो इसमें हम क्या लिखें? उनको चाहिए कि वो ग्राउंड पे क्या करें. जैसे ये नीचे आ रही है वो इक्वल डिस्टेंस पे क्या करें मार्क लगा दें. If she covers equal distance in equal time, then their speed is constant. तो क्या लिखना चाहिए अब्दुल्ला? सर के सबसे पहले तो ये बात लिख लें कि if she covers equal distance in equal time और क्या लिखें सर एक तो वो हम लिखते हैं मार्क कर लिया करें मीटर्स को ग्राउंड को है ना. हाँ जी हम लिखते हैं the first mark, they first put a mark on the ground at equal distance. Put marks करते थे on the ground
at equal distances. Now he noted the time when she crosses when she passes through when she passes क्या लिखना चाहिए when she passes over each point when she passes over each point if she takes equal time to cross each mark so her speed is constant. Marks on the ground at equal distance. Now he noted the time when she passes over each point. If she ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देते हैं they first put marks on the ground at equal distance in the middle of the section in the middle of the right ठीक है now he noted the time when she passes over each point if she takes equals time to cross each mark so her speed is constant ठीक है तो बच्चे अब्दुल्ला जो अभी तक आपने भेजे है ना ये आज हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 1 एंड 1.1 एंड 1.2 1.345 का कल भेज दूंगा कल आपने भेज देना ठीक है जी ओके बच्चे खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। Yes.